Assalamu alaikum. I am your instructor Najir Raza from Al Murtada School Senior Boys Branch. Today is day 2 of our chapter Elements, and this is our lesson number 2. So let's start the lesson number 2. I hope you have done your assignment number 1 and your worksheet. This was the summary that we have done, the learning that we have done in our previous lesson. So this is a summarized way of that lesson. What is atomic number? Atomic number is identity of any atom. It is always particular for any atom. Atomic number means the number of proton present in nucleus of an atom. What, the number of proton is always equals to the number of electron present in nucleus of an atom. What is mass number? Mass number means the number of proton plus the number of neutron. We are not going to calculate or add number of electron. So if we want to find the number of neutron, so how we are going to find? We are going to calculate it. हम mass number में से minus कर देंगे atomic number या number of proton को, तो हमारे पास neutrons की amount पता चल जाएगी. So these are the summary and this is very, very important for you. So please learn it by heart. Now, atomic structure of oxygen. Oxygen का atomic structure आपके पास है. So just calculate, count how many electrons are revolving. Your time starts now. Yes, you are right. There are 8 electrons. So now count how many green ones are there inside the nucleus. They are protons. Yes, you are right. 8 protons are there. And how many blue ones are there? Count it. It is difficult, but yes, it is again 8. So let's see. Atomic structure basically tells you that how many electrons are revolving around the nucleus and how many proton and neutron are present inside the nucleus. So number of neutron present in nucleus of an atom of oxygen, how many was there? Yes, you were right. 8 protons were there. 8 neutrons were there. And how many protons were there? Again 8 proton थे. How many electron? हमने अभी summary में देखा कि जितने proton होते हैं उतने क्या होते हैं? Yes, you are right, electron. So the number of neutron is 8. The number of proton is again 8. The number of electron is again 8. So what will be the atomic number? Yes, it is 8. And atomic mass is, what is atomic mass or mass number? It is sum of proton and neutron. So 8 plus 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 16, right? So we are going, if we are going to do it, so this one is 8, this one is 8, and this one is again 8, and atomic number is 8. And what about the mass number? It is 16. How it is 16? Because we have add number of neutron and number of proton, so it becomes 16. So oxygen has atomic number 8 because it has 8 proton. It has mass number 16 because it has 8 neutron and 8 proton. And its atomic number is 8 because it has 8 protons. Now, see the table. In this table, there are all the 18 elements representing. We have their name, symbol, atomic number, number of protons, number of neutrons, and number of electrons. Students, if you look carefully, atomic number जो है वही number of proton है, वही number of electron भी है, right? The only thing different is number of neutron. This table is very, very important for you because this table is going to help you in grade 6, then grade 7, and 7 के बाद तो आपकी further studies में ये table आपके लिए बहुत ही important है. How to learn these elements? इनको याद करने के लिए आप इनका mnemonics भी बना सकते हैं, एक कोई short form. इनको sequence से भी याद कर सकते हैं. The most common practice that I always ask my student to do that, take the
प्रिंट और फोटोकॉपी दिस टेबल, ये बुक में भी टेबल दिया हुआ है, और इसको अपने घर का मोस्ट फ्रीक्वेंट पॉइंट जैसे आपका बेडरूम, आपके कबर्ड का डोर, आपका फ्रिज का डोर, आप उसके ऊपर इस टेबल को पेस्ट कर लीजिए, लगा लीजिए। आते जाते इसको देखते रहिए, तो आप ग्रेजुअली हैबिचुअल हो जाएंगे इसको बार बार पढ़ने के। सो अपनी स्टडी जहां आप करते हैं वहां पे इस टेबल को पेस्ट रखिए, सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न इट वेरी इजीली, और आप इसे बार बार देखते रहेंगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर होती रहेगी। नाउ व्हाट इज एलिमेंट की? इन SST you must have a map की, आपके पास एक मैप की होती है जिसके थ्रू आप मैप को स्टडी करते हैं, राइट? इसी तरह से हर एलिमेंट की एक की होती है। व्हाट इज एलिमेंट की? इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ एलिमेंट। इट टेल्स अस अबाउट atomic number, symbol, name and mass number, right? हम कोशिश करते हैं कि नियरेस्ट जीरो पे राउंड ऑफ कर लें, सो वी राइट mass number of oxygen as 16, right? Now how to draw an element key? आप element key कैसे draw करेंगे? First of all you have to draw a box. You have to draw a box like this. Then you have to write the name of element, जो भी उसका element का name होगा। टॉप पर आएगा उसका atomic number एंड बॉटम पे आएगा उसका एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास आपको ये टेबल बाय हार्ट याद हो। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप इस टेबल को याद करेंगे तभी आप एलिमेंट की ड्रॉ कर सकेंगे, राइट? ईच एंड एवरी SLO ऑफ दिस चैप्टर इज लिंक्ड विद अदर SLO। इफ यू आर गोइंग टू मिस वन SLO, आपने एक भी लेसन में अपना होमवर्क प्रॉपर नहीं किया, टीचर की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की, आप अगले स्टेप में जाके पजल हो जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे। सो बी केयरफुल while studying this chapter. Again, I am repeating how to draw an element key. First of all, make a box, then write name of element, topmost पे उसका atomic number, bottom पे उसका mass number. Element key of carbon is in front of you, atomic number 6, C is element का symbol, name of element is carbon and atomic mass is 12. Assignment number 2. Assignment number 2 is you have to draw an element key. You have to define what is element key and you have to draw element key of first 18 elements. आपको first 18 elements की element key draw करनी है. It is a time taking process. It will take time, but you have to draw it. Why? Because this is a very important question in your exam. What is your home task? Do the given worksheet. What is worksheet number 2? आपको एटम को स्टडी करना है और उसकी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। इसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन होगा, एक एटम दिया हुआ होगा, आपको उस एटम को स्टडी करना है और उसके बाद उसकी वर्कशीट को फिल करना है। और आपके पास जिस तरह आपने स्लाइड में ऑक्सीजन एटम को स्टडी किया था, इस तरह मैंने एक दूसरा एटम जो है वो आपको दिया है वर्कशीट में स्टडी करने के लिए। I hope so. This lesson is easy and informative for you. Please follow all the instructions given by your teacher and do your homework on time so that the lesson number 3 will be easy for you. It's Najir Raza signing off from Science Classroom. Take care of yourself. Allah Hafiz.